and we're dealing with change of trim. Due to density. Okay. So basically हमने केस 1 and केस 2 किए थे, and 98 or 99% of the questions are going to be based on those two cases that we had done. Now we're going to create some kind of a this thing. Supposing this is the waterline of the ship, and this is seawater, and she goes to river water, W1 L1. So therefore, this becomes her increase in underwater volume. And therefore, this is the K, this is the G, and this is the B. Now, so we're doing case 1, and in case 1 now, I am creating some more variations. So in case 1, supposing the center of flotation is located somewhere. Supposing I locate the center of flotation aft, that means I'm calling it A, LCB is greater than LCF. Sorry, LCF. That means the center of flotation lies aft of the center of buoyancy. So the B1 will go towards the center of flotation in the direction of that. And therefore, the vessel trims by head. So trimming moment is by head. But supposing in another case, the LCB is less than LCF. That means the LCF is greater.
That means the center of rotation is forward. Of the center of buoyancy. That means the shape of the water plane area is such that it is more forward, less aft. Then that means the shape of the vessel, water plane, is not the conventional shape, but आगे में broad है और पीछे में narrow है. वो भी possible है. It depends on the shape of the vessel. तो अगर आगे से ब्रॉड है पीछे से नैरो है तो वो जहाज का सेंटर ऑफ रोटेशन आगे होगा. अब जब ये जहाज चेन्नई से जाएगा और हल्दिया पहुंचेगा तो इसका जो सेंटर ऑफ बॉयंसी नया वाला है ब्रावो 1 वो सेंटर ऑफ रोटेशन की दिशा में जाएगा आगे. क्यों? क्योंकि the increase in underwater volume forward will be more than the increase in underwater volume aft. In 99% of the cases, it is case 1A. So therefore, most of your questions are going to be based on that. But 1%, if somebody wants to finger you, he can throw you this question. Okay, LCF is greater than LCB. अब क्या करोगे? अब B1 will go आगे जिस दिशा में सेंटर ऑफ रोटेशन है और अब इस B1 के थ्रू W एक्ट करेगा अपवर्ड फोर्स ऑफ बॉयंसी एंड ये इसको उल्टा लेके जाएगा. दैट मीन्स द वेसल विल have a trimming moment ulta of the normal scenario. This is only in exceptional cases where the center of rotation is forward of the center of buoyancy, which happens only in rare cases, not in normal cases. And then the Bravo 1 will start moving aft and will come to Bravo 2. And therefore the triangle would be magnified. Look, it would be like this: B, B1, B2. Most of the cases, it's going to be 1A. But there could be a case where the values are given of LCF to you, which is forward of midship, and Bravo is given to you after midship. हमारे कोई ऐसी क्वेश्चन में ऐसा नहीं है, लेकिन this is only as a bouncer. पूछा था सेंटर ऑफ रोटेशन पहले से मान लिया गया है उतना आ गया है. Beg your pardon? सेंटर ऑफ रोटेशन जो आपने बनाया है पॉइंट वो इतना आगे कैसे गया? वो क्या रीजन था उसका? ये एक ऐसा केस है जिसमें जहाज की शेप कुछ ऐसी है.
जहाज की शेप ऐसी है, तो ऐसे केस में ये फॉरवर्ड है, ये आफ्ट है, तो इसका जो सेंटर ऑफ रोटेशन होगा विल बी फॉरवर्ड ऑफ सेंटर ऑफ बॉयंसी. यस सर. Normal scenario is inverted. That is, this is a normal scenario. This is forward, this is aft. All our vessels are like this, on which we all go. But there could be some vessels which have a forward broad, aft narrow. There you would have an LCF which would be greater than the LCB. So there the center of buoyancy, Bravo 1, will shift towards the direction in which the center of rotation lies. Is that okay? So, Yes, sir. So going by the same yardstick, case number 2, A is what we had done. LCB more than LCF. Vessel was trimming by stern. But there could be a rare case whereby the LCB is less than LCF, in which case the vessel would trim in the opposite way, and that is by head. So Chennai to Haldia, and we are talking about Haldia to Chennai. Is that okay with everybody? Yes, sir. So now I can give you some values. I can tell you LCF is 70 meters and I can tell you LCB is 68 meters in some question. So the moment you cite LCB greater than LCF, LCF greater than LCB, you know you're talking about Bravo cases. Whenever you're talking about LCB being greater than LCF, you're talking about the normal cases. That is what we have done. That is alpha cases. Is that okay? Quite obviously, this will not happen in HINDSHIP because in HINDSHIP, all our cases are alpha cases. That is, LCB is greater than LCF in HINDSHIP. So we don't have to worry. सर इसमें जैसे जो इनिशियल हमारा टीसी का फॉर्मूला होता है W इंटू एफ बी बाई एम सी टी सी डेल्टा, जो उसमें W इंटू एफ बी करते हैं. तो एफ बी इज द डिफरेंस ऑफ एफ एंड बी, तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा. अच्छा, यहाँ पे जी ठीक है सर. ओके ओके. तो फॉर्मूला हमारा वही रह रहा है. मैं फॉर्मूले को नहीं बदल रहा, कुछ किसी भी चीज को नहीं बदल रहा. सारी चीजें वही कांस्टेंट में रह रही हैं. टीसी भी वही रह रहा है, टीएफ टीए भी वही रह रहा है. खाली ट्रिमिंग मोमेंट की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी सर. खाली ट्रिमिंग मोमेंट की डायरेक्शन चेंज हो रही है. खाली ट्रिमिंग मोमेंट की डायरेक्शन को ऑपोजिट ले लेना है.
एंड कॉन्सिक्वेंटली टीएफ और टीए का जो साइन होगा वो इंपॉर्टेंट हो जाएगा, वो बदल जाएगा सर, वो अपोजिट हो जाएगा इसमें। वो उसको अपोजिट करना है। तो वो केस बी, केस ब्रावो वाले ले लेना, केस अल्फा वाला नॉर्मल है। ठीक है। हाँ जी, ठीक है, इज दैट ओके? यस सर। ऑलराइट। ओके, एक क्वेश्चन लो, ये भी एक बाउंसर है, ये भी आया हुआ है। ship consumes a ship consumes 360 tons of bunkers. A ship consumes 360 tons of bunkers when moving from seawater 1.025 into fresh water 1.00 tons per meter cube. And on arrival, it is found that the draft has remained constant. The draft has remained constant. Calculate the displacement in seawater. Calculate the displacement in seawater. Calculate the displacement in seawater.
क्वेश्चन में डेटा बहुत कम दिया हुआ है. Data given is very less. When the data is given is very less, what does that indicate to you? वेट लॉस हुआ है उतना सिंकेज हुआ होगा. करेक्ट. जितना लॉस हुआ है उतना ही सिंकेज हुआ है. बिल्कुल ठीक. लेकिन डेटा बहुत कम है क्वेश्चन में. ना आपके पास टीपीसी है, ना आपके पास डिस्प्लेसमेंट है, ना आपके पास एमसीटीसी है. वो लॉजिक बिल्कुल ठीक है कि जितना मेरा कंज्यूम हुआ है 360 टन का, उसके वजह से जो मेरी राइज हुई है वही मेरी सिंकेज भी है. बट उस अप्रोच को करने के लिए मेरे को बहुत सारा डेटा चाहिए जो कि मेरे पास है ही नहीं. तो जब क्वेश्चन में डेटा बहुत कम होता है तो उसका क्या मतलब है? क्वेश्चन आपको क्या है? इक्वेशन बनेगा. नंबर वन इक्वेशन बनेगा, वो तो ठीक है बिल्कुल. लेकिन क्वेश्चन आपको क्या हिंट दे रहा है? डाटा से कैंसिल आउट हो जाएंगे सब पीपीसी और जो अपन एज्यूम करेंगे. नहीं, क्वेश्चन आपको जब डेटा बहुत कम है किसी क्वेश्चन में, तो इसका मतलब है क्वेश्चन आपको बेसिक्स पे चेक कर रहा है. क्वेश्चन इज टेस्टिंग यू ऑन योर बेसिक्स. अब जब क्वेश्चन बेसिक्स पे जाता है तो आपको क्वेश्चन में से ही हिंट निकालना है. और हिंट क्या है? क्वेश्चन को अगर फिर से पढ़ो तो हिंट कहता है ड्राफ्ट रिमेन्स कांस्टेंट. ये हिंट है. मतलब जो मेरे ड्राफ्ट थे चेन्नई में वही मेरे ड्राफ्ट हैं हल्दिया में भी. इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जो मेरी अंडर वाटर वॉल्यूम चेन्नई में थी वही मेरी अंडर वाटर वॉल्यूम हल्दिया में भी है. एग्रीड? यस सर. ओके. अगर मेरी अंडर वाटर वॉल्यूम सेम है तो इसका मतलब है वॉल्यूम इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट ओवर डेंसिटी is equal to W2 upon density is equal to W1 minus 360 upon density. W1 or 1.025 is equal to W1 minus 360. Solve for W1.
Sir, 14760. One. And therefore not asked in this question. किसी और क्वेश्चन में अगर कोई पूछ लेता है, W2 will be equal to 14440 360 माइनस हो गया. So that's your answer. So basically 3 लाइन में हो जाता है सॉल्व. लेकिन अगर आप उस टीपीसी और एमसीटीसी का रूट लोगे तो गोल गोल घूमते रहोगे. ठीक है. ऐसा ही एक क्वेश्चन और ले लो. दिस इज फ्रॉम सेकेंड में ट्रे में. ये क्वेश्चन ट्रे में का है. अप्रैल 2003 में आया था ये. A ship of length 200 meters a ship of length 200 meters MCTC 250 is at a draft of forward 5.70, aft 6.40 meters. She requires 1200 tons of cargo. She requires 1200 tons of cargo to complete the loading. She first loads 600 tons. She first loads 600 tons 2 meters forward of midship. Forward of midship. And the drafts then are observed to be 5.85, 6.55 meters. The remaining 600 tons is to be loaded in number 2, 43 meters forward of midship, and number 4, 37 meters above midship.
Number 2, 43 forward of midship. Number 4, 37 abaft midship. Calculate the amount to be loaded in each space. Calculate the amount to be loaded in each space so that the aft draft will be 6.60 on completion. Find also the final forward draft. Find also the final forward draft. सोच समझ के करना. क्वेश्चन में काफी ट्रिक्स हैं और काफी डेटा मिसिंग भी है. तो आपको सबसे पहले तो मिसिंग डेटा की दिशा में जाना कि आपको क्या क्या चीजें चाहिए क्वेश्चन को करने के लिए, और उनको पहले ढूंढने की कोशिश करो. वो क्वेश्चन में ही मिलेगा आंसर उसका. ठीक है, इज दैट ओके? ये ट्रिम ए का क्वेश्चन है. काफी पुराना क्वेश्चन है, अंदर से ढूंढ ढांड के निकाला है मैंने कहा जरा पुराने क्वेश्चंस करें. ओके, चलो, सी यू देन. मंडे से वी विल स्टार्ट विथ जीजेड कर्व. ओके सर, जैसे इन जिन केसेस में हमें ध्यान रखना है कि एलसीबी छोटी है बड़ी एलसीएफ से, तो जैसे हमने जो फॉर्मूला लिखा हुआ है उसमें हमने लिखा हुआ है कि एफ बी जब हम निकालते हैं एलसीएफ माइनस एलसीबी, तो अगर हम उसमें वहां पे बी एफ लिखें डब्ल्यू इंटू बी एफ और वो हमेशा पॉजिटिव होगी तो हमारी गलती नहीं होगी. जब भी वो नेगेटिव आए तो हमें ध्यान आ जाएगा कि केस बी का हो गया. नहीं, ऐसा नहीं हो सकता. एलसी मैंने आपको लिखवाया है, एफ बी इज एलसीबी डिफरेंस एलसीएफ. हाँ जी सर, एफ और बी के बीच का डिस्टेंस. डिस्टेंस मैंने आपको डिफरेंस बताया, मैंने माइनस नहीं बताया. मैंने आपको माइनस नहीं लिखवाया था, मैंने एलसीबी डिफरेंस एलसीएफ कराया था. एलसी एफ डिफरेंस एलसीबी कराया था, माइनस नहीं लिखाया था. विच एवर इज ग्रेटर हो सकता है. सी, FB is the difference between F and the B, whichever is greater. यस सर, बट एक यूनिफॉर्मली डायरेक्शन में देखें, अगर हम हमेशा यूं कैलकुलेट करेंगे एलसीबी माइनस एलसीएफ तो एफबी आएगा हमारे पास हमेशा, मतलब वही बात होगी. बट जब भी नेगेटिव आएगा तो हमें यूं इंडिकेशन हो जाएगी कि दिस इज केस बी, क्योंकि एलसीएफ इस टाइम आगे है एलसीबी से. तो वो वाला कॉन्सेप्ट ठीक है, गलत हो जाएगा फिर, ये कुछ और कॉम्प्लिकेट हो जाएगी. दोबारा बोलो. सर हम जैसे टीसी जब भी निकालते हैं तो डब्ल्यू इंटू एफ बी डिवाइड बाई एमसीटीसी अंदर डेंसिटीज ले लेते हैं. तो इन एनी वे वी फाइंड आउट कि एफ और बी में डिफरेंस क्या है. तो वो तो हम एलसीबी माइनस एलसीएफ करें या एलसीएफ माइनस एलसीबी करें तो वो हम एफबी की वैल्यू रख देते हैं. इन केस एलसी अभी हम एफ बी लिखा हुआ है, जैसे इसको बी एफ लिख लेते हैं कि हमेशा एलसीबी माइनस एलसीएफ करें तो इट विल ऑलवेज बी पॉजिटिव. वो 1% जब वो नेगेटिव होने वाली होगी जिन केसेस में एलसीएफ आ गया है तो इट विल कम एज नेगेटिव. तो हमें उस टाइम इंडिकेशन हो जाएगी कि फॉर्मूले में कि ये इसमें मतलब ध्यान ना भी दिया ना
जस्ट बिकॉज हम नोमेनक्लेचर BF लिख दिया है तो हमें ध्यान हो जाएगा कि ये वो 1% में चला गया है जहाँ पे अब ये नेगेटिव आ रही है वैल्यू, तो अपोजिट होएगा सब। So what you are wanting to do is you want to create a distinction in the formula between BF and FB. That's what you want to do. यस सर, कि वी डोंट मिस आउट, की अगर मिस भी होगी ना कि LCFB और LCFB आगे पीछे नहीं दिया ध्यान, ये वो बी केस में जा रहा है 1%, तो हमारे वो नेगेटिव साइन जो आएगा वो हमें आइडेंटिफाई कर दे। ओके ऐसा कर लो। मैं तो बेसिकली मैंने आपको जो मैं तो इस चीज पे कर रहा हूँ कि इन मोस्ट ऑफ द केसेस योर इट इज गोइंग टू बी अ केस ए, अल्फा होने वाला है। केस ब्रावो होगा जब LCF is going to be greater than LCB and therefore difference will remain the same, values will remain the same, सब कुछ सेम, खाली वो उसकी ट्रिमिंग मोमेंट ऑपोजिट हो रही है ब्रावो में। बस मैं तो खाली इस तरीके से याद करा रहा हूँ। यू वांट टू रिमेंबर इट लाइक दिस, दैट्स ओके बाय मी, दैट्स ओके, दैट्स फाइन, दैट्स नॉट गोइंग टू क्रिएट एनी कॉम्प्लिकेशन, methodologies remain the same. ओके सर। Basically just remember चेन्नई टू हल्दिया अल्फा में बाय हेड जाता है, वो तो हमें पता ही है, वो तो अब अभी इनग्रेन्ड हो गया हमारे दिमाग में, बट ब्रावो में बस टर्न हो जाता है। ऑपोजिट हो जाता है फ्रॉम द नॉर्मल सिनेरियो। ठीक है, इज दैट ओके? ओके सर। ऑलराइट, सो मंडे से स्टार्ट करते हैं जीजेड कर्व की कहानी। ऑलराइट, ओके, चलो सी यू, बाय।